देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान की नई क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश रखते हैं। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम की 4 मसाजिद पर नामालूम अफराद का हमला, खिड़कियों के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, 6 अफराद हलाक, 23 जख्मी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का न्यूजीलैंड की हम मनसब को टेलीफोन। न्यूजीलैंड में खुदकार हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। सानेहाए क्राइस्ट चर्च, मुसलमानों से इजहार यकजहती, तलबा ने अजान सुनी। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमले में हलाक तमाम 50 अफराद की शनाख्त कर ली गई। मशाल कत्ल केस के 2 मुलजिमान को उम्र कैद, 2 को बरी कर दिया गया। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, दुनिया को भारत के दोहरे मयार का नोटिस लेना होगा। भारत की खुसूसी अदालत ने समझौता एक्सप्रेस केस के फैसले में 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। अमरीकी सदर और इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड में कल जुम्मे की अजान सरकारी मीडिया पर नशर की जाएगी। नई हॉलीवुड फिल्म यूएस का शानदार प्रीमियर, फिल्म कल रिलीज होगी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। Sister cities of Houston join the 25 years of celebration through citizen-to-citizen diplomacy, kicking off reception for SCI 2019 annual conference. The event was sponsored by Mr. Javed Anwar, with the presence of Mayor Houston and connecting sister city representatives. Welcome everybody, this is DESI TV USA. We are at the multi-ethnic event, Sister City of Houston. And let's ask some questions to the guest this evening. Follow me. Hi, welcome to the Sister Cities Fall Kickoff, Fall Concert Kickoff. Thank you. For the Sister Cities International Conference being held in Houston next July. Oh, thank you. Thank you so much. It's great. It's a multi-ethnic event, right? Yes, it's 18 different sister cities, and Karachi is one of them. Karachi and Saeed Sheikh is one of the active members of Sister Cities of Houston. Thank you so much. The event was accompanied by Mr. Harry G. President Sister Cities of Houston, Congressman Al Green, and following consulate generals and respective city presidents, representing their city and ethnic culture by participating in musical and dance performances. Honorable Sylvester Turner, the Mayor of Houston. I want to give a special thank you to our title sponsor of the night, Mr. Javed Anwar of Midland Energy. There he is, my friend. He's the chief patron of our Houston Karachi Sister City Association and a dedicated and long-term supporter of Houston committees. Please give it up to Mr. Anwar. Thank you so very much. Comes from all over the globe. But when you come to the city of Houston, we don't just celebrate the diversity, we celebrate the inclusiveness in our city. Because truly, unless we are operating in an inclusive spirit, we still miss the mark. And one way of
of celebrating that inclusiveness is through our sister city organizations and the connections that exist. And so let me thank all of you. This is a very special event because each and every one of you, from the countries that you represent, you are so very special friends to the city of Houston. Thank you, Harry G., for your leadership. Thank you, Sonny, for your... Sorry. Fred. Are you City in the United States. Right. 1 of 4 Houstonian is foreign born. Right. So, and we are very inviting and welcoming city. So I think the future for the city of Houston is extremely bright, especially on the international scene. Right. I have a question. One more question. Sure. How do you see the crime in the future in this city? Like, is going to be a better situation or? Well, let me just say, as the mayor of the city of Houston, I'm always saying it's going to be better. You know, quite frankly, I will tell you that our homicide rate is lower than what it has been in the last several years. Mm-hmm. You know, but any crime is one crime too many. Any homicide is one homicide too many. Right. So we're always going to work to make sure that we are safe and secure. But if you take a look at the city of Houston and compare us to Chicago, there's no comparison. Right. We are much, much safer. Much better. So, but I'm not going to be satisfied until there are no homicides in the city. Nobody is getting abused or robbed or hurt in any way. That's the goal. Right. It's a really important point. That's important. And police officers, law enforcement can do it by themselves. Right. It's a community effort. Community. And so that's why it's important to have very close community relationships. Right. A big support for HPD. Absolutely. So I'm very pleased of the work that Chief Acevedo and the police officers are doing. But I'm also very pleased with the community's response. Right. Okay. Right. So we're going to work. My number one priority is to maintain the safety and security of the people in the city. So we're not going to stop until we are crime free. Right. Let's put it that way. That would be great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Last interview right here. Thank you. Thank you, guys. Part of your business? Yeah, that's cool. We are here with the president. I would like to ask a question about this multi-ethnic event. What do you think about Houston in the future with the different culture here? We are so blessed that we live in one of the most diverse city of the United States. Houston, every 4 out of 4, 1 person is from some other countries. Right. And we are so blessed that today, since Houston has 18 sister cities, and Houston Karachi sister city is one of them, that with the help of our parent organization, an umbrella organization, which is the sister city of Houston, we have hosted together this event to have the kickoff for the upcoming international conference, in which many delegates from around the world will participate, and also to feature the fall concert, where the performances from around the world, where people like troops from around the world will present their culture, which is the main cause, or with the main deal of the sister cities. Right. An objective of the sister cities to bring the people from one place to other place together. To fuse together. And have the cultural interaction, right. Cultural exchange, and also do projects for the betterment in different areas from one city to another city. Right. That brings people to people, direct link and interaction. Right. Thank you. Good, important point. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let me just start out by thanking Sonny, okay? His introduction was very, very gracious. I appreciate that. But I also want to give it up tonight for Lamb Creek. Give it up to this. Woo! I think we can do better than that. Come on.
Sister Cities of Houston join the 25 years of celebration through citizen to citizen diplomacy, kicking off reception for SCI 2019 annual conference. The event was sponsored by Mr. Javed Anwar, with the presence of Mayor Houston and connecting sister city representatives. All over the globe. That's just who we are, and we're getting excited and getting ready for next year when Houston hosts the Sister City International Conference, July 17th to July 19th. Are you ready and excited for it? Let me just be very quick, because I want you to get to the concert. I want to thank Harry G. for your leadership. Sister Cities Houston, thank you, Harry, for your leadership. Really appreciate that. I want to thank Sonny Shomer tonight for being the chair of the concert for this evening. And then I want to thank the title sponsors. And title sponsor of the night is Mr. Javed Anwar of Midland Energy. Please give it up to Mr. Anwar. I want to thank our gold sponsor, Mr. Alex Chain of East West Bank. Give it up to him. Our silver sponsor tonight is Mr. John Chian of Suba USA. Please give it up to them. And then I want to thank all of the Sister City associations, the partners, the sponsors, everyone who has contributed. But most importantly, I want to thank all of the volunteers for the work and the effort. Please give it up to all of our volunteers. I just came back from India with a delegation of about 35, but I wanted to be here tonight because, quite frankly, you can't be an international city if you don't operate it in the international way. And we are so diverse, but we are diverse because of the international flavor in our city. We're not just diverse, but we're inclusive. And so you gotta be happy, you gotta have some spirit. Now, y'all really didn't get into it like I was hoping you would have gotten into it. So next year, the Sister Cities, you're coming up on the stage and you're going to perform yourselves. It's not just going to be me and Councilmember Laster. You know, Councilmember Laster, I had to drag him up here. But next year, we'll go even bigger and better. So thank you all tonight for being here and being supportive. Thank you so much. President of Karachi Houston Sister City, Mr. Muhammad Saeed Sheikh, was also being recognized by his Lifetime Services Achievement, awarded by President Donald Trump in Washington and presented by former President George Bush in Houston. With you that one of our members has been the president of the Houston Karachi Sister Cities Association, Muhammad Saeed, has been recognized with a Presidential Lifetime Achievement Service Award and received the award from President George Bush. Mohammed, would like to... The event was accompanied by Mr. Harry G. President Sister Cities of Houston, Congressman Al Green, and following consulate generals and respective city presidents, representing their city and ethnic culture by participating in musical and dance performances. Yo toqué la banda, la espalda se luce. Cuando me hablas de amores, que lejos que me estás quedando, yo que tanto te quería. He's passionate about people, he's passionate about society, and he's passionate about the world. Javed Anwar from Midland Energy is that young man, and he is our title sponsor. It is my true honor to bring somebody who is going to be recognized by PBPA Top 10 Award, which is the highest award that anyone can ever receive.
icon of philanthropy, a successful businessman, an ardent promoter of education, receiving the highest award that one has ever received. Please put your hands together to bring someone so iconic, and we're so honored to have him as a Vitago sponsor, Mr. Javed Anwar. Please come up, please. Mr. Javed Anwar, CEO, Midland Energy, presented his ongoing support with sister cities and sponsoring of upcoming SCI annual conference. He said he wants to make more things possible through his support in everything he can, representing the sister cities, their diversity, culture, and expertise in their respective fields. In such a way that I cannot admire. It's always been my philosophy, if you're blessed, let's share it. So, few of my friends from Houston asked me if I can sponsor this program, international occasion in July 2019. I said I'd gladly love to do it. What amazing performance, by the way, from all these artists. Congratulations to the city of Houston of celebrating an annual concert in this beautiful place. I feel blessed to have the opportunity to this celebration of 25 years of peace through diversity, and want to express my appreciation to my dear friend of Houston Mayor Silverstone Turner, diplomats and elected other officials, Sister City official, President Hera G, to the performance of the volunteer and all who generously helped make this event come together. I'm sorry Mayor Turner had to leave, but I hope somebody conveys this remark to him. This event is an extraordinary way to the awareness of community, how Houston sister cities, 18 sister city relationships have promoted to intellectual appreciation, international trade, commerce, and tourism through citizens diplomacy. Over the years, I have been supporting sponsors of the award-winning Houston Karachi City Association and encouraging them to get involved with the city. It is a great honor to be here to sponsor this event. I wish I can attend more of these functions because I don't live here. I have to come from Midland, Texas. Anyway, and there is Honorable Al Green that's here, and I'm sorry that few of the massive diplomatic community that I like to be happy and great that you guys made it possible. I don't know all of you guys, but I'm sorry, but it's a great honor to be here. Again, thank you very much and good night. Congressman Al Green, would you please join us on the stage? I think that this sponsor who has traversed some great distance to be with us and who has made this possible with the help of others, of course. The event was accompanied by Mr. Harry G. President Sister Cities of Houston, Congressman Al Green, and following consulate generals and respective city presidents, representing their city and ethnic culture by participating in musical and dance performances. The culture, the dance that we have seen tonight, this is what makes America the Beautiful a more beautiful America. The event was accompanied by Mr. Harry G. President Sister Cities of Houston, Congressman Al Green, and following consulate generals and respective city presidents, representing their city and ethnic culture by participating in musical and dance performances.
علیکم، دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں شائستہ جلیل۔ نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات پر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ جلد پاکستان کی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ جلد پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں 4 مساجد پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسجد کی کھڑکیوں کے شیشے اور دروازے توڑ دیے گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا اور کرائسٹ چرچ حملے کی مذمت کی ہے۔ نیوزی لینڈ میں خود کار ہتھیاروں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم جیسنڈرا کہتی ہیں نیوزی لینڈ کو محفوظ ملک بنانے کے لیے خود کار ہتھیاروں پر پابندی ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے نیوزی لینڈ کی مساجد پر ہونے والے حملے میں ہلاک 50 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں جمعے کی اذان سرکاری میڈیا پر نشر کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ میں کل سرکاری میڈیا پر جمعے کی اذان نشر کی جائے گی۔ ملک بھر میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والی نور مسجد کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نیتن یاہو سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جشن نوروز کی تقریبات کے دوران دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ جشن نوروز کی تقریبات کے دوران زوردار دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق دھماکے کابل کے علاقے کرتا سخی نامی درگاہ کے نزدیک ہوئے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے کرائسٹ چرچ حملے کی مذمت تو کی، مگر مسلمان اور مساجد کا ذکر تک نہیں کیا۔ کیا یہ بھارت کا دوہرا معیار نہیں؟ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی مسلمان آبادی کی وجہ سے OIC میں نشست تو چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں کی بات کرتے ہوئے ان پر سختہ طاری ہو جاتا ہے۔ بھارت نے کرائسٹ چرچ حملے کی مذمت تو کی، مگر مسجد اور مسلمان کا ذکر تک نہیں کیا، جو کہ بھارت کا دوہرا معیار ہے۔ دنیا بھارت کے دوہرے معیار کا نوٹس لے۔ پاکستان کے شہر پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مشال قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا، 2 ملزمان کو بری کر دیا جبکہ 2 کو عمر قید کا فیصلہ سنایا ہے۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مشال خان قتل کیس کے 4 ملزمان کا فیصلہ سنا دیا۔ 2 ملزمان عارف خان اور اسد کاٹلنگ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ 2 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ کیس کی سماعت کے دوران مقتول مشال خان کے والد اور 46 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ عدالت نے 12 مارچ کو مشال خان قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ صوابی سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں طلبہ اور یونیورسٹی کے کچھ ملازمین نے توہین رسالت کے الزامات لگانے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ بھارت کی خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کیس میں ملوث 4 ملزمان کو بری کر دیا۔ بھارت کی خصوصی عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس کیس کے فیصلے میں 4 ملزمان کو بری کر دیا۔ خصوصی عدالت نے آج اپنے فیصلے میں کیس کے مرکزی ملزم اور انتہا پسند RSS کے رکن سوامی آسیم آنند عرف نبا کمار اور دیگر 3 ملزمان کمال چوہان، راجندر چودھری اور لوکیش شرما کو رہا کرنے کا حکم سنا دیا ہے۔ بھارت کے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی ملزمان کے خلاف الزامات ثابت نہیں کر سکی۔ پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا کو دفتر خارجہ طلب کر کے سمجھوتا ایکسپریس کے ملزمان کی بریت کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے سبب پاکستانی حکومت نے انڈین پریمیئر لیگ کے میچز دکھانے پر پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نظر ڈالتے ہیں کچھ انٹرٹینمنٹ کی خبروں پر۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں نئی ہالی ووڈ فلم
यूएस का प्रीमियर सजाया गया। नई हॉरर फिल्म हॉलीवुड के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में खौफ, दहशत और सनसनी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म यूएस का रंगारंग प्रीमियर सजाया गया। फिल्म यूएस की कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूम रही है जो साहिल किनारे छुट्टियां गुजारने जाते हैं, ताहम कुछ पुरस्कार लोग इन पर हमला करके इनकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हकीकी जिंदगी पर बनने वाली बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के लिए विवेक ने 9 रूप धारे हैं। मोदी की बचपन से लेकर जवानी और फिर चाय बेचने से लेकर मुल्क का वजीर आजम बनने तक की जिद्दोजहद को फिल्म की सूरत में पेश किया जाएगा। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए। Hello everyone, I'm your host Farhan Siddiqui. I welcome you to the H-Town Show from your own city, Houston, Texas. This is an infotainment and fun-filled talk show on DESI TV. If you want to be a part of this show or want to be a sponsor, please contact me at 832-907-7642. Keep watching DESI TV USA. Hundreds of protests gathered at Pakistan Consulate, Houston, USA. The clash got fired on the ongoing war in Kashmir and its people. The two countries have been fighting for more than 50 years over Kashmir conflict. Now they have a new topic to fuel the war over the new 2019 Pulwama attack. Mr. President, terrorists from Pakistan have again struck inside India. 40 security persons came last week. How do you see the situation there? What's the message? I've seen it. I've watched. I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. Seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Mr. Donald Trump's statement, he had said this thing earlier also in the context of Kashmir, that he would like to play a role, which was also welcomed by Pakistan. India has accused Pakistan for being behind the bombing and its militants. Pakistan has warned it will retaliate if India takes military action against it after a militant attack on Indian forces in Indian-administered Kashmir. Osama bin Laden, Pakistan. Osama bin Laden, Pakistan. Osama bin Laden, Pakistan. Hi, this is P.V. Patel from Houston, Texas. Today we are doing a demonstrations against the Pulwama terrorism act by Pakistan. So we are doing a demonstration against Pakistan Consulate General of Houston. There are so many people hurt because of what happened in Pulwama. All the Indians from different states and community are gathered here to show our protest and express our pain because terrorism has no place. ये पुलवामा हमले के बाद जो ये भारत ने सिलसिला शुरू किया है, ये एक बहाना है, ना इसके कोई शवाहिद है ना सबूत है और सारे इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। आज इन्होंने मुजाहरा किया जिसके जवाब में हम पाकिस्तानी कम्युनिटी खड़े और इनको जवाब दे रहे हैं कि तुम असल जो हकायक है वो अवाम के सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है बल्कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी की जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जहां जहां ये मुजाहरे करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर तरीके से इनका जवाब देगी और इनका मुकाबला करेगी। I think the Modi is the biggest killer. He's the terrorist. What he did in Gujarat. Pakistan needs to stop supporting the terrorists. That's the country which is giving financial support to all the terrorists.
and we are against it. We are going to fight it. This time we are not going to be quiet. Vande Mataram! और यहाँ पे हम एक पीसफुल काउंटर मुजाहरा कर रहे हैं अगेंस्ट इंडियंस जो सामने पाकिस्तान कौंसलेट के सामने हैं। यहाँ आज इंडियन जो है मुजाहरा करने के लिए आए थे, तो उसको काउंटर करने के लिए हम पाकिस्तानी इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान की कॉज को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान कौंसलेट को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं जो पाकिस्तान कौंसलेट में आज इंडियन ने मुजाहरा किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तानी बहुत लोग यहाँ जमा हो गए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़ा हंगामा कर रहे हैं इंडियन और गालियाँ दे रहे हैं। झगड़ा होने का खतरा था तो पुलिस, और आप मेरे पीछे देखें, पुलिस और सारी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं। You are just like all women. You are women. You are not men. If you are a man, come on now. Shame on you. You're not taking peace. Who's commander? जाओगे पाकिस्तान आज बनेगा, आज बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम यहाँ पे टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान, बिकॉज द टेररिज्म इज गोइंग अराउंड ऑल अराउंड. वी नीड टू स्टॉप दैट, एंड सिंस Pakistan is harboring terrorists, we want them to stop this doing, because there are many good people everywhere in the world. We have good people in every country, in every religion, but we don't support terrorism. यहाँ आज इंडियंस पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ऑफ ह्यूस्टन के सामने खड़े होके पुलवामा का नाटक रचाने की कोशिश कर रहे हैं. हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि पुलवामा पे ड्रामा करने के बजाय ये उन मासूम कश्मीरी जानों का हिसाब दे जो गुज़िश्ता 71 सालों से 7 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं. हमारी 8000 से ज्यादा कश्मीरी माओ, बहनों और बेटियों की इज्जतें लुट चुकी हैं. उन कश्मीरियों का हिसाब दे जिनकी 7000 कब्रें ऐसी आबाद हो गई हैं जिन पे कोई नाम और पता ही नहीं है. ये उन कश्मीरियों का हिसाब दे जो बुरहान वानी की शहादत के बाद से आज तक सिर्फ भारत से आजादी मांगने की पादाश में अपनी बिनाइयां खो चुके हैं. आज ये पूरी दुनिया में पुलवामा का नाटक रचा रहे हैं. ये उन लाखों मासूम कश्मीरियों को भूल चुके हैं जो भारत से आजादी पाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, और जब तक आजादी मिलती अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे. तो दफाओ के क्या यूं कर रहे हो, उस देखो बंदर को, वो बंदर की औलाद को देखो, खानदानी बंदरों को. सुअर जैसी है तेरी तो शक्ल ही सुअर जैसी है. कश्मीर क्या चाहता है? आजादी. आजादी कौन है? कश्मीरियों का कातिल कौन है? Step out of the road. If we have to, we will take you to jail. The Indian Foreign Ministry said the insinuation was regrettable, adding, India's democracy is a model for the world which Pakistan would never understand. Earlier, India's top military commander in Kashmir, Lieutenant General KJS Dhillon, accused Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) spy agency of controlling the attack with Jaish-e-Mohammed commanders, but he provided no evidence. The Chinese side has stated more than once that Pakistan and India are two important countries in South Asia. China hopes both sides will properly address the existing issues through dialogue and consultation. We hope related countries in the region can cooperate to deal with terrorism and maintain regional peace and security. Meanwhile in Pakistan, young generation has started a new Pulwama attack anti-hate challenging campaign, which is going viral in social media and leaves a big question for Prime Minister of Pakistan Mr. Imran Khan, who had already promised many hopes and dreams to the people. Is this the new face of new Pakistan? ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है. I fully understand the anger in the country. People's blood is boiling because of this attack. The expectations that the country currently has, and the emotions to do something about this, are completely natural.
We have given full freedom to our security forces. While on Twitter, the National Security Advisor of the United States Mr. John Bolton tweeted that, "I expressed condolences to NSA Doval yesterday for the reprehensible terrorist attack on India. Pakistan must crack down on Jaish-e-Mohammed and all terrorists operating from its territory. Countries should uphold UNSC responsibilities to deny safe haven and support for terrorists."
हुकूमत आई है वो इस सिलसिले में और आगे पेशरफ्त करेगी। दुनिया में ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत हैं और बट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का एजेंडा जो है वो बड़ा क्रूशल है। यानी इस्लाहात जो हैं वो हमें करने चाहिए और कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये हुकूमत भी करेगी, ताकि मईशत आगे बढ़े और आवाम का भला हो और गुर्बत में कमी आए। क्योंकि जो आम आदमी है उसको फ़र्क पड़ता है जब गुर्बत कम होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी इकनॉमिक टीम है और जो मुख्तलिफ, और अभी देखें सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस आए हुए थे, वो भी बड़ा, और मैं उनसे मुलाकात भी हुई थी कुछ हफ्ते पहले, और उनके आने से पहले तो हमने काफ़ी डिस्कस किया कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है। इसी तरह और ममालिक भी हैं जो हमारे दोस्त हैं, यूएई है, और फिर मलेशिया से भी महातिर साहब आ रहे हैं, और खान साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि एटलीस्ट वो इतने मुल्कों में उन्होंने चक्कर लगाया आते ही, जिसका बड़ा पॉजिटिव असर हुआ। वो सऊदी अरेबिया भी गए, मैं वहीं था उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें वो भी आए थे, और मलेशिया भी गए और यूएई भी गए, और काफ़ी ममालिक में जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह फिर पाकिस्तान की एक नई इमेज और बेहतर इमेज आगे आएगी, और इसमें वक्त ज़रूर लगता है। और ये भी एक हकीकत है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, उससे फ़वाइद भी हैं, बट फिर फ्रीडम भी ज़रा और सॉवरेंटी पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, क्योंकि वो फिर इंटरफेयर करते हैं। तो जितनी जल्दी हम इस्लाहात करें और IMF प्रोग्राम से निकलें, उतना और मेरी नज़र में तरक्की की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, वो और बेहतर हो सकती है। तो हमें हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, और उनको जिसे कहते हैं जिस तरह भी हर फर्द जो है पाकिस्तानी, चाहे मुल्क में हो बाहर हो, अगर वो मदद कर सकते हैं तो करें। ये तो हमारा मुल्क है जी, तो इसमें कोई हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। आप वो शख्स कहते हैं जो मेरी वाइफ का आपने, मैं कितनी उम्र पर 33 साल पहले तारिक रोड पे एक डेप्लेक्स होता था। ये आई और आप यहाँ आई, कैसा रहा? मसरत मिसबा डिप्लेक्स सबसे पहले इन्होंने बनाया, ब्यूटिशियन में ये सबसे पहले नंबर पे है, मरकजी किरदार है इनका ब्यूटिशियन का। ये जी मैं इस वक्त अपना 2018 के कन्वेंशन में हूँ। यहाँ पे हम दो मकसद के साथ आए थे। एक तो डिप्लेक्स और MM मेकअप जो कि हमारा हलाल सर्टिफाइड मेकअप है, उसको लोगों में बताना कि प्योर मेकअप क्या होता है, और उसके अलावा डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन जो कि तेज़ाब या मिट्टी की तेल से जली हुई ख़वातीन की मदद करता है, उनको उनके बारे में अवेयरनेस देना। और यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर्स का कन्वेंशन है, तो वो डॉक्टर्स जो पाकिस्तान आते हैं वो आके उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर किसी की खूबसूरती छिन गई है तो उसकी खूबसूरती वापस लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और वो बहुत प्यारा दिन होता है जब ये बच्चियाँ आके मेकअप सीखती हैं, काम करती हैं, ऑपरेशंस हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, ख़ुद मुख्तारी, आज़ादी, हुकूक, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर बेदार हो जाती हैं, एंड दे वांट टू लिव अगेन एंड दे वांट टू स्माइल अगेन। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान 5 बड़े मंसूबों की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मारूफ पाकिस्तानी आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला, 2 मुहाफिज हलाक, मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे। सानिया क्राइस्ट चर्च की याद में न्यूजीलैंड में अजानें अदा की गयीं, 14 को खराजे अकीदत। सानिया क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड के अखबारात ने शोहदा को सलाम पेश किया।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि क्राइस्ट चर्च हमला इस्लामोफोबिया का नतीजा है। सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद होने वाले 8 पाकिस्तानी मकामी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक, एक की मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। यौम पाकिस्तान पर खुसूसी मिली नगमा पाकिस्तान जिंदाबाद रिलीज कर दिया गया। अफगानिस्तान में तैनात 2 अमरीकी फौजी एहलकार हलाक हो गए। चीन में केमिकल प्लांट में धमाके से 47 अफराद हलाक, 200 जख्मी। भारत में इन दिनों आम इंतखाबात की तैयारियां। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सियासी जमात बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इराक